Hi there. Hi there. Welcome to Unacademy Empower. This is the last session in the series of ChatGPT that I'll be covering. तो हमने अब तक ChatGPT में काफ़ी कुछ कवर किया है. हमने देखा है कि ChatGPT रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, रिसर्च एनालिसिस के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, etc., and a lot of other similar examples, right? So what we're going to do now is something which is very close to my heart and something which is my main background, which is user understanding. So we're going to see how we can use ChatGPT for essentially understanding our users, right? There is a lot more technical level that we can get into over here. But since we're keeping it at a beginner level, especially in terms of using ChatGPT, मैं वही कोशिश करूँगा कि सिंपल रखें, आपको आसान तरीके से समझाएं और आपको ऐसे प्रॉम्प्ट्स दें जो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें. राइट, तो हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम इस आपके ChatGPT के जो बेनिफिट्स हैं, जैसे पहले वाले वीडियोस में हमने आपको बताए हैं कि एक तो एफिशिएंट है, आपका बहुत टाइम बचाएगा. दूसरा, आपको बहुत इन डेप्थ इंसाइट्स दे सकता है. आपको या तो समराइज वर्जन भी दे सकता है या बहुत डिटेल में भी जाके दे सकता है. ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको इंटरेक्ट करें, आप कैसे इसको इंगेज करें, आप कैसे इसको आगे बढ़ाएं. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आपका ये कॉस्ट इफेक्टिव है. माने आपका ChatGPT 3.5 जो है वो फ्री है, आपको बस लॉग इन करना है. इसमें याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, कि सितंबर 2021 तक ही डेटा है ChatGPT 3.5 में जो फ्री वर्जन है, उसके बाद वाला डेटा नहीं. तो आप ChatGPT 3.5 से सारा कुछ इंफॉर्मेशन लेके फिर आप उसको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं अपने तरीके से अपने आप. या तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं या आपके पास अगर और कोई डेटा सोर्स है आप उससे कंपेयर कर सकते हैं. अब इसकी इम्पोर्टेंस हम ये बात करेंगे स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू यूजर अंडरस्टैंडिंग. तो सबसे पहले यूजर अंडरस्टैंडिंग में क्या इम्पोर्टेंस इसकी आ जाती है. देखिए, हम बैठे बैठे बाकी सब यूजर्स के बारे में नहीं सोच सकते. उसका मतलब क्या है कि हम उनके शूज़ में जैसे बोलते हैं कि आई कैन वेयर द पर्सन शूज़ एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे थिंक, ये नेसेसरी नहीं है. क्योंकि क्या होता है कि बहुत ऑफन बायसेस आ जाते हैं. बायस माने मैं डायरेक्टली समझ नहीं पाता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो यूज़र मेरे को लगता है यूज़र सोच रहा है, वो एक्चुअली मेरा बायस हो सकता है कि मेरे को लग रहा है कि ये यूज़र ऐसा सोच रहा है, मगर रियलिटी में शायद ऐसा ना हो. सो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि हम समझें कि यूज़र के नीड्स क्या हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनको अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है, आपके ऐप में वो कहाँ अटक जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें या तो रिसर्च करके पता कर सकता है ChatGPT आपके लिए, या तो फिर आपका जो भी फीडबैक आपको मिलता है, समझो कस्टमर सपोर्ट से, या आपकी जो इंक्वायरीज आती हैं, या यूज़र रिसर्च से, वो भी आप ChatGPT में इंफॉर्मेशन डाल के उसके इनसाइट्स आप निकाल सकते हैं. इसके कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं ताकि थोड़ा और डिटेल में और थोड़ी और आसानी से हम ये समझ पाए. समझिए एक कंपनी ए है, ठीक है. उन्होंने एक रियलिटी में पूरा अपना प्रोडक्ट लाइन ChatGPT के आइडिया जनरेशन इस्तेमाल करके, यूज़र अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल करके अपना पूरा प्रोडक्ट लाइन बनाया है. समझो वो शुरू कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या क्या करें, कैसे करें. तो उन्होंने ChatGPT का इस्तेमाल करके एक तो आइडिया जनरेट भी किया, उसको वेरीफाई भी किया, डेवलप और टेस्ट भी किया, यूज़र का रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग भी किया, सब ChatGPT का इस्तेमाल करके. राइट, तो इसका रिजल्ट उनको क्या मिला कि उनका मार्केट शेयर और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों चीज़ें बढ़ गई. एक और यूज केस एग्जांपल हमारा ऐसा हो सकता है कि कंपनी बी, समझिए ChatGPT से नए मार्केट अपॉर्चुनिटीज थ्रू सर्वेज जो कस्टमर्स को भेज के
वो समझ सकें कि देखिए हम मार्केट में तो पहले से हैं, मगर थोड़े और नए अपॉर्चुनिटीज हमको ढूंढना पड़ेगा ताकि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो, क्योंकि हमारे अभी जो प्रोडक्ट लाइंस हैं वो बिक तो रहे हैं, मगर ऐसा हो रहा है कि वो एक डिमांड सीलिंग हिट हो रहा है हमारा। तो हमको थोड़ा इस पर इनोवेट करके नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए प्रोडक्ट लाइंस निकालनी चाहिए। तो ये भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो हम थोड़ा सा पहले बोल रहे थे कि हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके यूज़र के की जो फीडबैक्स आई हैं, या तो ऐप के थ्रू, कस्टमर सपोर्ट में, या समझो रिसर्च करके, हम उसको चैट जीपीटी में डाल के चैट जीपीटी से इनसाइट्स और एनालिसिस, वो फीडबैक्स का करके कि सेंटिमेंट क्या है, कि यूज़र्स को एग्जैक्टली क्या चाहिए जो हम दे नहीं पा रहे हैं, ये सब समझ के हम फीचर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और रिटेंशन रेट्स जो हैं और यूज़र का जो एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हो गए आपके 3 ऐसे एग्जाम्पल। ऐसे बहुत और हैं, बट हाई लेवल पर ये 3 एग्जाम्पल्स हम अभी के लिए इनको पकड़ के आगे बढ़ेंगे। अब हम लेते हैं एक एक्चुअल सिनारियो जो मेरे सामने मैंने देखा है और मैंने पढ़ा भी है। अब एग्जैक्टली मैंने क्या किया है कि ये ऐसे 2-3 सिनारियो थे, मैंने उनको कंबाइन किया एक यूज केस में बनाने के लिए, सो इट्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कंज्यूम, राइट। लेट्स अज्यूम दैट देयर इज अ कंपनी जी, राइट। एक ट्रैवल टेक स्टार्टअप है। उन्होंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके यूजर की जो प्रेफरेंसेस हैं कि उनको क्या चाहिए, उनको कहाँ ट्रैवल करना है या करते रहे हैं इतने टाइम से, उनको जब वो ऐप पर आते हैं सबसे पहले उनको क्या देखना है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, जब वो एक जगह जाते हैं, या तो होटल जाते हैं या कोई एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, what would they prefer over there where they go, right? When they're exploring the app, what are the different features which may help them? So they use ChatGPT to understand all these many different things. So how did they do it? So they integrated ChatGPT into the website's chat support, right? To interact with visitors and understand their travel needs better. That's one way that they did it. The second way is that they gathered valuable information about popular destinations, generally ChatGPT से, and preferred types of accommodation क्या होते हैं, और most sought after travel activities या experiences जहाँ हमारे users जा रहे हैं वो क्या होते हैं। तो ChatGPT का इस्तेमाल करके डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स डाल के उन्होंने ये इंफॉर्मेशन निकाल लिया, और फिर यही इंफॉर्मेशन से उन्होंने अपना ऐप को इम्प्रूव किया, अपना रिकमेंडेशन सिस्टम्स वगैरह इम्प्रूव किया। वही नेक्स्ट पॉइंट वही है कि ये सारे इंफॉर्मेशन जो लेके उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस जो ऐप पर हैं और कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशन है उसका मैचिंग ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छी तरह उन्होंने किया। अब इस पर एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि हमने शुरुआत से, अगर आप ये पूरी वीडियो सीरीज देखेंगे ChatGPT पर, एक बार बार एक पॉइंट सामने आता है, वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वेदर यू यूज ChatGPT, whether you do it yourself and you put that in analysis and that information into ChatGPT to generate insights, whichever way you do it, information gathering, whether as a real life in product management, whether in building your resume, whether in anything that you do, is very, very important, right? So, of course, ये सब करके फाइनली क्या मिला यूजर कंपनी को, जो एक बॉटम लाइन होता है, जो उनका इम्पैक्ट होता है, जो उनके पैसे बनने चाहिए। सो दे सॉ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कन्वर्जन रेट्स। कन्वर्जन रेट्स माने कि जो यूजर्स ऐप के ऊपर आ रहे हैं वो एक्चुअली बुकिंग कर रहे हैं। ये तो एक हो। दूसरा, क्योंकि ये जो कस्टमाइजेशन कर पाए ये सारा इंफॉर्मेशन लेके, they were able to improve the satisfaction scores that the users had when the users, both after using the app, but more importantly,
उनकी बुकिंग की एक्सपीरियंस के बाद, स्टे के बाद, एक्सपीरियंस के बाद कि उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव हो गया। अब देखिए, ये एक मैंने कंपनी जी तो बोल दिया है, बट देर आर, एंड आई हैव सीन दिस अक्रॉस मल्टीपल टेक स्टार्टअप्स वेयर दे आर doing this on a real time basis today, right? There are many other such instances, such as for example आपके जो रिव्यूज आते हैं ऐप के ऊपर, कंपनीज आर लुकिंग टू यूज चैट जीपीटी टू ऑटो जेनरेट रिव्यूज, माने यूजर को पूरा का पूरा रिव्यू टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या रिव्यूज के बेसिस पर एक सजेस्टेड रिव्यूज भी आ जाती हैं, राइट? एंड यू विल सी दिस ऑन सम एप्स। सो देयर आर मेनी implications or options for you as you go more deeply into ChatGPT and how you can use it for the users, right? So one thing जो हमने एक previous session में cover किया था research और analysis में, कि trends. So एक बार once all this information is available to the company and ChatGPT is available to the company to use, with all the insights, the company was able to identify future emerging travel trends. अब ये करके क्या कर पाई कंपनी की, they were always able to innovate their offerings to stay ahead of the competition. Now this could be about pricing, this could be about location, this could be about experiences at certain things. It could be about which which locations or hotels or whatever, depending on the use case, is being recommended to the user. There are many ways to do this, right? But they were able to always innovate and stay ahead. This in a market which is always competing for users' mind share, becomes very, very important, right? Just going to pause for 5 seconds here so that you can take this in, and then we'll move forward. So something that we should start exploring and doing is the prompts, like I have covered in every other section. तो prompts फिर से क्या होता है? Prompts basically आप जो ChatGPT को बोलते हैं उसको prompt बोलते हैं, right? And how well your prompt is designed makes a huge difference, and this comes through experimentation. मैंने पहले भी बोला है कि देखो, आपको बहुत सारे prompts मिलेंगे अगर आप LinkedIn पर जाएंगे। बहुत सारे कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो prompts आपको सप्लाई कर रहे हैं, उनको लीजिए। मैं जो prompts दिखा रहा हूँ उनका भी इस्तेमाल करिए, अपना भी बनाइए, मगर आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना होगा ChatGPT खोल के, to see what works for you and how you can use that information you've gathered, being the different prompts, to make it more helpful and easy for you. So we'll talk about prompts for surveys. Surveys सबको जानते हैं, सब जानते हैं क्या है. So one kind of prompt for a survey could be that prepare questions for conducting a user research survey for XYZ problem, and we can define the problem. Another one is similar but still a little different, is prepare a list of 10 questions that I can ask in a user research survey for this problem statement, XYZ statement, right? Third one is given below is a list of sample questions to use as a starting point. Please generate additional questions and also please provide feedback on the ones that have been shared. So let's come back here, right? What you will see is each of these prompts can be used individually, but you can also use each one of them to build on top of the other. All right, so let's try and experiment. Go to ChatGPT with it and see what happens.
So let's take the example of Airbnb research and analysis जो हमने हमारे सेशन में जो हमने कवर किया था, जो prompts Airbnb के ऊपर, जहाँ पर हमने उसके ट्रेंड्स, उसके हिस्ट्री वगैरह वगैरह ये सब निकाला था. We will use that as our baseline for this discussion instead of starting a completely fresh problem statement. If you would like to know what all has been covered, you can take a look at that video. And but at a high level, like I said, it was for research and analysis on Airbnb. For this problem को थोड़ा हम refine करते हैं. For the problem of users not moving past the home page. हाँ जी, तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसको रिफाइन करते हैं. And voila, very quickly it came back to you with 20 questions that you can ask in a survey for the problem statement as to why users are not moving past the home page when they come to the app, right? And this is a real life problem that product managers face with respect to how people use the app. Okay. Let's try the next one. And we will just, like I said, build on top of this instead of starting fresh. And then, yeah, user research survey को हम थोड़ा refine करके बोलते हैं user research in-person survey. And if you notice that the questions are slightly different. Why? Because I have added these two words in here. Now, why did I do this? This is to give you also an example of how ChatGPT understands your prompt basis the words used in that prompt, right? So one was generic user research survey, और ये सर्वे ऐसा हो सकता है कि आप नोटिफिकेशन के थ्रू भेजो, या आप इन पर्सन पूछो, या आप कस्टमर कॉल सेंटर पर पूछ सकते हैं, या आप ऐप के ऊपर पॉप अप करके पूछ सकते हैं, एटसेट्रा. अब मैंने यहाँ पर इन पर्सन स्पेसिफिकली लिखा कि अगर मैं इन पर्सन इंटरव्यू कर रहा हूँ तो क्या पूछना चाहिए मेरे को. तो वहां पर ये आ गए आपके. अब अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़े से इसमें सिमिलैरिटीज होंगे, but fundamentally the way that the questions have been framed also will be different, because when you are in person doing an interview with a user versus asking a user through the app or through a notification or something else, right, it is a very different experience for the user. Now let's look at the third prompt.
एंड इसको भी लेके हम थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे. Given above, जो ऊपर है ऑलरेडी, नीचे हम डाल नहीं रहे, as a starting point, please generate additional questions. Also provide feedback on the ones shared. So, as that gets filled out, let's just quickly review the top ones, right? So, इसमें हमने बस यूजर रिसर्च सर्वे बोल के 20 सवाल यहाँ पर आ गए. यहाँ पर एक नोट ChatGPT ने आपको दिया है, वो है these questions will help gather valuable insights into whatever related to the homepage, helping to identify potential improvements and increase user engagement, which is the main problem statement, right? अब जब हमने बोला in-person survey, तो यहाँ पर ये जो 10 सवाल दिए ChatGPT ने, उस पर ChatGPT ने additionally आपको एक दो चीजें बोली हैं कि in-person survey के बारे में. तो it is very essential and this is part of user understanding, especially when you are a user kind of PM, right? You need to encourage your user participants to elaborate on their answers. These are very simple questions, right? So the questions also need to be more open-ended to allow them to simply just give their response instead of asking for very specific, does this work or does that not work? All right? Because that is how you gain more deeper insights into how a user actually behaves and uses your app. So the emotions and the motivations आपको बहुत आसानी से और समझ आ जाते हैं, right? So the questions will then therefore be framed that way. Now, while all of that has already been done, and before we go into the next prompt, which is this one, and the feedback basis this prompt, मैं फिर से यहाँ पर एक caveat डाल रहा हूँ. जो भी ChatGPT आपको देगा, आप जरूर उसको रिव्यू करिए, एडिट करिए, अपने कॉन्टेक्स्ट में क्या अप्लाई होता है, कैसे होता है, वो देख के फिर आगे बढ़िए. So let's see additional questions ChatGPT ने दिए, right? यहाँ पर जैसे ऊपर में एक सवाल है, Are you aware of any special offers, promotions or personalized recommendations on the homepage? If so, do they influence your decision to explore further? Now you'll notice this is not a question that you can ask through a notification, right? It's very much more complicated. So maybe this is in a call center when somebody calls and you ask for kinetic feedback. This is a question to ask. If you go down to the in-person survey, and you remember me saying that it needs to be more open-ended, this is the way that the kind of questions that get asked, right? Are there any particular elements on the homepage that you do find engaging and interesting today? Why? So you allow the user to give you that input and feedback. आप उनको bias करके ये नहीं बोलते, ये वाला आप बताइए कैसे चल रहा है. अब आगे बढ़ते हैं. अब एडिशनल क्वेश्चंस कैसे आए, जैसे वो वाला हमने देखा, एक और सॉर्ट ऑफ स्लाइटली मोर डिफरेंट वाला, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ मोर यूआई डिजाइन पर्सपेक्टिव, कि कोई एलिमेंट्स है होम पेज पर जो आपको ज्यादा विजुअली अपीलिंग या आई कैचिंग लगता है, राइट? हैव यू एवर यूज्ड एनी कॉल टू एक्शंस, मीनिंग होम पेज पर कोई भी आपने किसी चीज पर क्लिक करके अदर सेक्शंस ऑफ ऐप में प्रोसीड किया है? अगर नहीं किया है तो क्या रोक रहा है आपको ये करने से, राइट? So these are additional questions which are not covered on top. Now it's given you some feedback on the sample questions. It says overall they are well rounded, meaning ज़रा कुछ cover हो चुका है related to user engagement on the app's homepage. There are a few more points that you should think about and consider as you do these. Diversity of user profiles, right?
सो अभी हम आगे वाले सेक्शन में यही वाले सेशन में थोड़ा एक समझेंगे एक कॉन्सेप्ट यूजर पर्सोनास के बारे में. मैं उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट इट इज रिफरिंग टू कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर्स, राइट. यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड वो यूजर के सेगमेंट्स क्या हैं, वो यूजर के पर्सोना माने वो टाइप ऑफ यूजर ग्रुप्स आर दे, एटसेट्रा एटसेट्रा. एक और पॉइंट बोला है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखो. आप ऐसे कुछ मत करिए जो पूरा क्लोज एंडेड हो जाए, स्पेशली इन पर्सन इंटरव्यूज. इन पर्सन इंटरव्यूज में ये भी लिखा है इन्होंने कि कंटेक्सचुअल प्रोबिंग. सो समझिए कि आपने कोई सवाल पूछा यूजर से. लेट्स टेक द वन वेयर डू यू फाइंड एनीथिंग विजुअली अपीलिंग ऑन द होम पेज which you would like to engage with and click on, for example. So user ने जवाब दिया, yes, I like the recommendation section on the top of the page. So then your question goes further, right? That is your context that you have received. So you need to then build further questions where you probe further. आप और सवाल वही जवाब पर और पूछें, क्योंकि वही पूछ के आपको समझ आएगा कि यूजर का इमोशन क्या है, मोटिवेशन क्या है. जब आप एक और पॉइंट यहां पर इसने कहा, क्लियर डेफिनेशंस. अब जब आप यूजर से बात करते हैं या समझे आप यूजर को कोई सर्वे भेजते हैं, यू नीड टू कीप इन माइंड दैट नॉट ऑल यूजर्स अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजीज दैट यू यूज व्हाइल क्रिएटिंग समथिंग, राइट. अगर आप कोई भी डोमेन में हैं, समझो आप फ्रेशर हैं, आप सेल्स में हैं, मे बी आप सेल्स फोर्स इस्तेमाल करते हैं और आपको काम दिया गया है प्रोजेक्ट मैनेजर कि आप सेल्स फोर्स इंप्लीमेंट करो कंपनी के लिए, तो आपको इंटरनल यूजर से बात करना पड़ेगा. अब योर इंटरनल सेल्स पीपल ऑन द ग्राउंड विल नॉट नो terminologies that are relevant to Salesforce, so you have to simplify the words that you use, right? So it's connected to the next point, which is simplicity and clarity. ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो हमने देखा कि सर्वेज में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉम्प्ट्स, राइट. तो ये हमने कर लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म यूज किया, यूजर पर्सोना. अब बिफोर वी गेट इनटू prompts for user personas, it's important that we first understand what are user personas. So user personas are fictional characters representing different types of potential users. So it is not Amar as the user, but it is Amar, the user, as a representation of a group of users, right? So there will be huge number of users who will be grouped under Amar as a user, for example. Yeah. So based on research and data, we create user personas to be able to understand better what are the user needs, goals and behaviors. So Amar the user, right? And Amar the user is a representation of many users who have similar user needs, goals and behaviors, right? So like I said, personas help create a clear picture of who the users. Now अब आप बैठ के ये नहीं कर सकते कि आप समझो आपके 10 मिलियन यूजर है, आप हर इंडिविजुअल यूजर का अलग पर्सोना नहीं बनता है. वो इंडिविजुअल यूजर्स हैं, मगर वो यूजर्स ग्रुप होके अलग अलग पर्सोना बनते हैं. से फॉर एग्जांपल अमर द आर्किटेक्ट, यू कुड हैव मंजू द मैथमेटिशियन, राइट? So things like that.
Once you have these personas, which are essentially groups of, different representations of groups of potential users, you can create products and features to address and meet specific वो अमर की या मंजू की यूजर की नीड और इंटरेस्ट्स, एंड ये आप टेलर कर सकते हो, पर्सनलाइज कर सकते हो यूजर पर्सोना लेवल पर कि एक्सपीरियंस क्या होगा। और जैसे ही आप ये करोगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस कि प्रोडक्ट या फीचर कैसे चल रहा है, उससे रेवेन्यू कितना आएगा, एंगेजमेंट कितनी होगी, वो सब इंक्रीज होगा। तो लेट्स टेक 2 एग्जांपल्स, राइट? तो आई हैव गिवन यहाँ पर एक ओवरव्यू as to what user personas are, and this is again very basic, very high level. There is a lot more to this story, which next week I will cover in a different session. So 2 examples of user personas. So for example, you may want to tell ChatGPT that write the possible user persona for our e-commerce app that is a marketplace for D2C brands, and you can include these pieces of information, right? Another example that you can give to ChatGPT is, imagine you're designing a new app for language learning. Instead of thinking about all users, etc., you create few personas. Each of these personas will have this. So the first example is actually a prompt, right? Which you can take and put into ChatGPT. I'm not going to do that right now, because first I want in the next few slides to spend some time understanding कि यूजर पर्सोना के अंदर अलग अलग क्या क्या चीजें आती हैं, और वो हर चीज के लिए एक इंडिविजुअल प्रॉम्प्ट भी होता है, बना सकते हैं। मैंने कुछ सजेस्ट किए हैं अपना रिसर्च करके, लिंक्डइन पर देख के, हमारी पीयर कम्युनिटी में जो इस्तेमाल हो रहा है वो देख के। सो इट वाज एक्चुअली अ कलेक्टिव एफर्ट I've taken from all these different sources. The second one is what I was saying, say you say Curious Kathy, Busy Bob, Tech Savvy Tim, right? These are personas. So they are fictional characters. Amar the product manager is not fictional, but Amar the architect is a fictional character, right? So these are fictional characters, groups of users इनके अंदर आ जाते हैं और इनकी डिटेल्स आ जाते हैं, जो उनके ट्रेट्स क्या हैं, एज क्या है, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे इस पर कि जो यूजर पर्सोना है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो लेट्स कवर ईच ऑफ दीज इंडिविजुअली एंड यू विल सी दैट ईच वन ऑफ देम have a prompt associated. Now this is generic prompts. If you are going to use these prompts, आपको इसको फाइन ट्यून करके स्पेसिफिकली अपने सिचुएशन के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने फीचर के लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो मगर ये पर्पस क्या है जो हम अभी बात कर रहे हैं कि यूजर पर्सोना में आता क्या है। आपके यूजर पर्सोना में डेमोग्राफिक्स आते हैं। डेमोग्राफिक्स में क्या आता है? आपका एज, आपका जेंडर, आपका लोकेशन, कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, थिंग्स लाइक दैट। फिर आता है आपकी इंटरेस्ट और हॉबीज। सो फॉर एग्जांपल you may say, let's take an OTT app all of us are using, right? Disney ho, Disney Hotstar ho, Netflix ho, Prime Video ho, etc. So इसमें इंटरेस्ट और हॉबीज क्या हो सकती हैं कि आई एंजॉय वॉचिंग ऑनलाइन कंटेंट at the click of a finger on my mobile phone. So interest और hobby यहाँ पर क्या हो गई कि I enjoy watching content on my phone directly, and main interest and hobby क्या है कि I enjoy content. I love to consume content. That's my interest, right? Not necessarily a hobby. Hobby could be, my hobby is football, and if my hobby is football, then very possibly I end up watching a lot of Premier League, for example, right, which gets put on Hotstar, right? Or my hobby is cricket,
and I love watching the cricket matches on Insta. Then we have goals and aspirations, right? Goals and aspirations are different than interests and hobbies, of course. मगर आपको समझने पड़ेंगे कि यूजर के प्राइमरी गोल एस्पिरेशन क्या है रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट, राइट? सो जनरल एक गोल और एस्पिरेशन हो सकता है, से अमर द आर्किटेक्ट wants to do very well in his career, but related to an OTT product, there's no connection to that statement, right? So the goal or aspiration with respect to the OTT product could be, my goal is to be able to watch fresh Indian content easily on my mobile phone as I travel from home to work. Simple, nothing complicated about that. इसमें and then next point पर आते हैं, challenges and pain points. अब बहुत often हम ये वाला challenges और pain points जो हैं users के, इसको skip करके आगे बढ़ जाते हैं या फिर देखते हैं मगर इसमें deep dive नहीं करते. My suggestion and my recommendation of 10 years of having been in the product space is that a lot of your work and your life as a product manager will be and should be focused around understanding challenges and pain points of your users that they face in their daily lives. Now, this could be creating something new as a new product altogether. Maybe you're starting up. This could be you are working for a company which has been around for a decade. Maybe it's a Fortune 500 product company and you are working on one small piece. Like Microsoft, maybe you're just working on the whiteboard, for example, on Teams. You need to deep dive and understand to that extent what are the challenges and pain points. Because if you don't understand that, you will end up building things which don't get used, right? Which don't move a metric. So this is very, very important. Motivations for using the product, similar to goals and aspirations, but this is more about what is the end goal that they're trying to achieve, right? What is the core emotional motivation? Goals और aspirations में आपको एक outcome दिखेगा, right? मगर motivation में आपको थोड़ा उनका emotional standpoint समझना पड़ेगा. I'll give you an example. Say that you are building a feature for ratings and reviews on your product that you're working on as a product manager. And आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 25 चीजें हैं जो मैं बिल्ड कर सकता हूं, मगर जब तक आप इमोशनल मोटिवेशन नहीं समझेंगे यूजर, which in this case could be either that they want to be part of a larger peer ecosystem who are posting reviews, and therefore creating an award system is very important, creating a leaderboard is very important, right? The way Zomato does very, very well. Ya phir is the emotional motivation that I want to, that users want to be able to trust the reviews on the platform that are already there, right? So depending on what the motivation is, you will build. The first motivation will make you build things which will increase more reviews. The second motivation is something which you have to think about, what reviews already exist. You can generate more reviews in a better manner, but what already exists, how do you make that better for users to consume? So trust builds for them. Yeah. Other pieces of the user persona, what are the different communication channels that a user prefers? So आज के दिन में SMS बहुत ही कम लोग देखते हैं. WhatsApp तो बहुत लोग देखते थे, मगर अब क्या होने लग गया, WhatsApp भी आस्ते आस्ते SMS की तरह होने लग गया है. So people are being very, very wary of what they consume on WhatsApp also, right? So email first was there, then SMS was there, now WhatsApp is there, and of course there is notifications on the app. Understanding the preferred channel is very, very important. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ.
मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था एक कंपनी के लिए कपल ऑफ इयर्स को, जहां पर यूजर को सेम कम्युनिकेशन जा रहा था नोटिफिकेशन से भी, एसएमएस से भी, ईमेल से भी, व्हाट्सएप से भी, और कभी कभी ऑटोमेटेड आईवीआर से भी. So basically the user was just getting bombarded, yeah, overwhelmed with communication. So they have no choice then just to delete the app and unsubscribe, right? So we have to really, really understand this aspect. Another piece of user persona is influencers and role models. So let's take the OTT example, right? Maybe a user persona is Siddharth the student, and he basically consumes Disney Hotstar on his phone, and he is like a peer influencer in his group, and all his friends come to him to say ki you tell us what to watch, right? So his friends actually regard him then as the influencer or role model. A different example could be that we look up to certain actors or certain sportsmen, and if they become brand ambassadors to the product, you will automatically become a member of that product, right? So there are different ways to look at this, and again we'll deep dive into this a lot more next week when we understand consumer behavior and B2C products, etc. All of that, right? It's important, the next one, right, कि टेक्नोलॉजी की तरफ ये यूजर टाइप का, ये पर्सोना का क्या एटीट्यूड है, आप उसके हिसाब से बनाइए. I have worked very, very deeply with users and building for user personas in the rural India sector, in the tier 2, tier 3 sectors. I've worked, developing products and features for people who are not digitally savvy, right? Very often people think अगर यार वो tier 1 में कोई बैठा हुआ है तो वो digitally savvy है. Just look around, and if you see your parents around at home, or if you see the help who comes to the house, everybody has a smartphone. But how many of them are able to use it properly, right? Are they scared of it? Are they early adopters, meaning are they some of the first people to pick up new technology? You have to build your products and features keeping this in mind. Okay, the next part, brand loyalty, is another part of user persona. So how do you build something or make something where users stay loyal to you, right? And it's important to understand today, अगर आप मार्केट में कुछ आ रहे हैं कोई कंपटीशन के हिसाब से, समझो जोमेटो और स्विगी ऑलरेडी है और आप थर्ड पार्टी आ रहे हैं, तो यूजर्स अपनी लॉयल्टी जोमेटो या स्विगी से छोड़ के आपके पास क्यों आएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. इंफॉर्मेशन सोर्सेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, कि यूजर्स कहां से अपना इंफॉर्मेशन उठाते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. वेरी ऑफन आपको जब भी आप कोई चीज पर सब्सक्राइब करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको हमारे बारे में कहां से पता चला. दिस इज बेसिकली दैट, राइट? It's important for us to know that what user persona goes to what source to get their information. How does this play a role? When you get into the go-to-market phase, GTM बोलते हैं प्रोडक्ट की दुनिया में, मीनिंग कि प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं आप वगैरह वगैरह, उसका मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये वाला पीस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? It's basically at a very, very fundamental level. You need to attack your users and catch hold of them there, right? In order to be able to get them onto your platform. So yeah. So let's try a couple of these prompts and see what comes out. So again, a few prompts from Hello PM, right? Really thank you to the team and the over there that creates this fantastic content for people to use and experiment and learn. So let's take the first prompt.
और मैं इसको डालूंगा जो हमने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, which is around the gym tunes in previous videos, which is a music app for fitness people, right? So I will use that and build on top of that. If you would like to know what all content is already sitting, you're more than welcome to consume that video and you can watch it in fast speed to get an idea and come back here. बट फिर भी मैं आपको एक बहुत हाई लेवल दे देता हूँ. मैंने बेसिकली एक ऐप के ऊपर फिटनेस म्यूजिक ऐप फॉर फिटनेस पीपल के ऊपर रिसर्च, कंपटीशन एनालिसिस, पीआरडी डेवलपमेंट, यूजर स्टोरीज जो हमारे प्रीवियस सेशंस रहे हैं उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ाया है. अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं विद रिगार्ड टू यूजर पर्सोनास. मैं इसको थोड़ा एडिट कर रहा हूं फॉर माय यूज केस. तो जैसे आपने देखा 3 types of personas create हो गए हैं with respect to fitness enthusiast, right? And they are mainly Emily, and they've talked, and ChatGPT has given you pain points, motivations, goals, objectives, usage habits, right? Second one is Alex, and third one is Sam, right? And it's given you across. So on one axis it's given you the sections of pain, motivations, etc. On the other axis it's given you other information such as fitness level क्या है, preferred workout क्या है, challenges क्या हैं, etc. right? अगर अब एक और चीज यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे कि it is not necessary that all the different line items जो मैंने दिखाए थे आपको कि यूजर पर्सोना में क्या क्या आता है कि वो इंक्लूड हो जाए, right? So what I would suggest is if you would like that level of detailed information, you can fine tune आपका जो prompt आपने डाला है to list out each of those points and say I want all of this information. Alternatively आप क्या बोल सकते हैं कि जो information दे दिया है उसके ऊपर अगर आपको specifically और कोई points चाहिए तो वहां से आप ये additional prompt डाल के आप ले सकते हैं. अब यहां पर
दो और प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैं आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा. I will not get into because they are little more technical. I've kept it for people who are maybe have a sense of product management and want to explore a little more. हाँ जी. So over here prompt number 2 जो है गूगल के सिस्टम में एक डिजाइन सिस्टम है हार्ट करके, right? And product managers and designers work with this very, very closely. What is the heart principles? I'll get into that next week in much more detail when we talk about building products for next billion users, right? India में बोलते हैं building products for Bharat, right? Which is beyond just tier 1 cities. So इसमें ये है कि using those principles, can you come up with 5 questions, right? जो हमारा survey वाला piece था, which I can ask my users of the streaming app, right? एक third prompt है, we have created this music streaming app, right? But it failed to attract any market share. What could be the reasons for the same? So while this is not directly connected to a user persona in a way of building the persona, it is connected to understanding our users and why something that we built, which we thought would succeed, did not succeed, right? तो लिमिटेशंस में जाने के पहले मैं लेट्स डू वन थिंग, एक ट्राई कर लेते हैं कि जो गूगल वाला है हार्ट वाला, मैं वो वाला इस्तेमाल करके एक बार दिखाता हूं. एंड मैं यही वाले जो हमने बनाए थे यूजर पर्सोना, इन पर ही पूछूं. Right? So just by adding this one line, you can see how easy it is to understand the principle, the question, and the reason for the question, and what is it that you can get out of it, right next to each other. So what is heart? High level per, it covers happiness, engagement, adoption, retention, and task success. Now, as product managers, there are many such frameworks. There's heart. In a different way, there is something called the pirate funnel, which is R, which is double A, triple R, or triple A, double R. People use different combinations. There is a model called the BJ Fogg's model. There are many frameworks for different use cases, right? I'm not going to get into those in detail, but just to touch upon, this is one of them. It's one of my favorites, which is the heart model, because I am very much a user first people, right? So yeah, this was one example where 5 very beautiful questions can be put forward to your users, during your interviews. If you can reframe them for surveys, you do that as well, to better understand how they are consuming your app.
Sorry, just waiting for it to load. Right. So we're reaching the end of our ChatGPT series. This is the last video, and I'm ending it on the note of user understanding, because all my future videos, I will cover AI, I will cover consumer behavior, I will cover B2C product world, I will cover customer experience. I will cover it all from the viewpoint or angle of a user first PM, right? Just to close the loop here. So we've discussed this in previous videos. ChatGPT, though absolutely amazing, is a tool, and like every tool has its limitations. One is the data accuracy, second is language barriers, third is it is not a replacement for your actual user interviews, for your domain expertise, for your stakeholder management skills and other strengths that you possess. So learn to experiment and use this tool and get better at it, rather than either depend on it or escape from it, because it is a part of our world, right? Wishing you all the best in this journey of ChatGPT. Please leave your comments. I would love to know what more you'd like me to cover. If there's something you'd like me to improve upon as we do these videos, very happy to hear your feedback. Thank you very much. Have a great day.